Hi there, welcome to another session. आज हम लिस्ट कॉम्प्रीहेंशंस देखेंगे इस वीडियो में और उससे अगली वीडियो में then we'll talk about assertions and exceptions. List comprehensions are pretty important. Basically, they let you do more stuff in less amount of code, or they're also easy to read and fix. Let's suppose आपके पास एक फंक्शन है which takes list as a parameter. अब ये फंक्शन क्या कर रहा है, ये हर लिस्ट में जाके उसको स्क्वायर करता है और उसको एक नई लिस्ट में अपेंड करता है और वो नई लिस्ट रिटर्न कर रहा है. सो बेसिकली व्हाट दिस फंक्शन इज डूइंग, इट्स जस्ट रिटर्निंग अ लिस्ट ऑफ स्क्वायर्स. और वो स्क्वायर्स कहाँ से आ रहे हैं, नंबर्स ओरिजिनल वो आपकी इस पैरामीटर जो लिस्ट आपकी पास हो रही है उसमें से आ रहे हैं. सो फॉर एग्जांपल अगर आपने स्क्वायर्स कॉल किया विद द लिस्ट 1 2 3 4 5. So what this function is going to do is it's going to create a new list. So this one, and then it's going to just start going over the original list item by item और हर item का square करके वो नई list में append कर रहा है. And और फिर नई list, and remember this is a keyword, new list. It's not mutating the existing list, it's creating a new list and then it's going to return that. So it's going to return this function, the square of all items in the list here. अब यहाँ पे जो चीज़ नोट करने वाली है वो ये है कि this list is applying, in this case it's applying square, लेकिन this can be any generic function that you like. कुछ भी हो सकता है, आपका अपना कस्टम फंक्शन हो सकता है, क्यूब हो सकता है, लॉग हो सकता है, कुछ भी, anything. So that code is responsible for doing that. Now, if we talk about list comprehension, what list comprehension does is it does exactly the same thing, but in a single line. So यहाँ पे आप देख रहे हैं this syntax. This is a bracket, the start. This is the ending bracket. और उसके बीच में there is some stuff there. What this basically does is it's creating a new list based on some criteria. उसके बारे में हम डिटेल से देखते हैं. एंड दैट इज इक्विवेलेंट टू द प्रीवियस कोड दैट वी सॉ. यहाँ पे अब इसका कंपैरिजन है. अब वी आर क्रिएटिंग अ न्यू लिस्ट ऑफ स्क्वायर्स इन दिस केस. सो व्हेन वी वांट टू क्रिएट अ न्यू लिस्ट ऑफ स्क्वायर्स, अगर आप लेफ्ट साइड पे देखें तो here we are creating a new list in line number 2, and on the right side we are creating a new list in line number 2 in here also. So यहाँ पे it's enclosing the entire stuff, जिसके बारे में अभी हम थोड़ी देर में देखते हैं कि ये क्या चीज़ें inside these square brackets. So in both cases they are creating a new list. They are not mutating the existing list. That's the key. In our for loop case, it's going to iterate over all items in the list. And here, this code is going to iterate over all items in the list. So pretty simple. लेकिन इसमें फॉर लूप की बॉडी नहीं है कोई. अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद अब हर आइटम के ऊपर आप स्क्वायर अप्लाई कर रहे हैं या कोई भी फंक्शन अप्लाई कर रहे हैं और उसको एक नई लिस्ट में अपेंड कर रहे हैं. जबकि यहाँ पे हर आइटम पे आप आइटरेट कर रहे हैं और उस आइटम के ऊपर आपको फंक्शन अप्लाई कर रहे हैं, एंड दैट विल बी ऑटोमेटिकली एडेड टू दिस न्यू लिस्ट. सो दैट्स हाउ इट वर्क्स एसेंशियली. इन वन लाइन you are doing squares of all of these items. You can also optionally specify some criteria at the end here. So for example, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे we are creating a new list. We have the for loop that goes over all of the items. We are applying a function to the items, लेकिन there is additional if statement जिसकी कोई body नहीं है. So इसको अगर हम थोड़ा सा decompose करें तो what this essentially says is, first of all, the step number 1, for all items in the list, if our criteria fits on the item, only then we will apply this function to the item. So in this case, this is creating a new list of squares, but not just any numbers. It's going to create a list of squares of even numbers, because यहाँ पे again हम देखते हैं दोबारा, this is going to go through all numbers in the list, which is 1 2 3 4,
and then it's going to apply this criteria to each of the numbers. So इस केस में जो भी numbers even होंगे, आपने ये वाला criteria, ये वाले जो formula है फंक्शन, वो सिर्फ और सिर्फ उसी पे अप्लाई करना है, इवन नंबर्स पे. इन शॉर्ट, जो नंबर्स इस क्राइटेरिया पे पूरे उतरेंगे उस पे आप ये अप्लाई करेंगे. अगर हम इसको देखें तो अगेन एग्जैक्टली द सेम सिंटैक्स एज बिफोर. पहले वाले केस में हम जब फॉर लूप के थ्रू करें, वी क्रिएट अ न्यू लिस्ट. यहाँ पे वो एक ही लाइन के अंदर लिस्ट क्रिएट हो रही है. तो इन दोनों के कोड्स को अगर हम कंपेयर करें तो फॉर लूप इज गोइंग ओवर ऑल ऑफ द एलिमेंट्स इन द लिस्ट, और लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन वाला जो सिंटैक्स है उसके अंदर भी यू आर गोइंग ओवर ऑल ऑफ द आइटम्स इन द लिस्ट यूजिंग दिस सिंटैक्स फॉर ई इन एल. एग्जैक्टली सेम थिंग, but it's just flattened into one single line. And then हर आइटम के लिए हम पहले चेक करेंगे कि क्या आइटम वो क्राइटेरिया को पास करता है कि नहीं. अगर वो करता है तो then we apply this function and append it to a new list. Again in this comprehension syntax हम exactly वही चीज़ यहाँ पे कर रहे हैं. हम उसके ऊपर एक क्राइटेरिया अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन हमको कोड उसके अंदर बॉडी के अंदर एग्जीक्यूट नहीं कर रहे. सो इसमें यही हो रहा है कि अगर वो आइटम जो कि ये क्राइटेरिया पास करता है, then this function will be applied and this will be added to the new list, and that's about it. So इसके बाद, so these are bunch of examples for list comprehension. इसमें अगर आप देखें तो the way we are constructing a list in a single line is हमारे पास we are going over each item in range 4, और हर item के ऊपर we are applying this expression, which is basically the squaring of the item. As you can see that this variable is exactly the same as that one because इसके ऊपर हम apply कर रहे हैं operation. So the list that it returns is going to be the square of all items. अगर हमने criteria थोड़ा सा change कर दिया, criteria के अंदर we are only considering all of the numbers and then applying whether these are even or not, और सिर्फ जो नंबर्स इस क्राइटेरिया को पास करते हैं सिर्फ उन्हीं के ऊपर ये फंक्शन अप्लाई होगा, एंड दैट्स द स्क्वायर्ड. सो व्हिच मींस कि वी आर ओनली स्क्वायरिंग द even numbers and creating a list out of that. And this is another a little bit complex example. इसके अंदर again you're going from range 1 to 4, और यहाँ पे हम सिर्फ even numbers के लिए, in this case this is odd numbers basically. So odd numbers के लिए we are creating a smaller list in which there is a number and there is a square of the number that's bound in a single pair of list. So number और उसके square की जो lists हैं वो हम return कर रहे हैं as items. So 1 squared is 1, 3 squared is 9, and so on. So you can be really creative with this thing. This can be anything. This can be a function, any sort of function, not just square. It can be really complicated. So what value is returned by this expression? ये जो हमने syntax देखा, सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने देखना है कि what are the values in the sequence. So जो भी आपको sequence दिया गया है, so for example अगर आपको दिया जाता है for I in कोई list होगी ना यहाँ पे, तो उसके अंदर कौन कौन सी values है, तो इस केस में it's x, a, b, c, d, 7 and 4, right? That's step 1. ये आपने identify करना है, और वो आपने identify कर लिया, तो फिर then which subset of values does the condition filter out? तो ये जो condition है ये किन किन items को उस list में से pass करेगी. इसका मतलब है कि if the type of any item x in the list is if that's string, only then that is passed. So इस केस में कौन कौन से items pass होंगे? This one, this is a string, this one, this is a string, this will fail, and this one, this is a string. और जितने items pass हुए हैं उन सब के ऊपर आप apply करेंगे length, and length of this is 2, so this will be added to the list. Length of this is 4, this will be added to the list. Length of this is 3. I remember that this is string, not a floating point number. So the answer is going to be 2, 4 and 3, and that's the output basically. That's the result of this expression, this single line list comprehension expression. There are other tools, map, filter,
reduce, which facilitate functional programming, which we are not going to go into detail. Lambda हम पहले कर चुके हैं. They are anonymous functions. We use lambda keyword to define them. So map क्या चीज़ है और filter क्या चीज़ है, reduce क्या चीज़ है. Map, you can think of it as a function. Basically map is a function which takes two parameters. एक तो है function और दूसरा है an iterable. So map के अंदर आप एक function देंगे और एक list देंगे और map जो है वो इस function को हर लिस्ट के इस लिस्ट के हर एलिमेंट पे अप्लाई कर देगा और एक नई लिस्ट बनाएगा और वो आपको पकड़ा देगा. फॉर एग्जांपल हियर. सो इसने क्या किया, इसने स्ट्रिंग फंक्शन पकड़ा, उसको 1 पे अप्लाई किया, उसका जो रिजल्ट है उसने नई लिस्ट में स्टोर कर दिया. फिर 2 पे अप्लाई किया, उसका रिजल्ट नई जो स्ट्रिंग लिस्ट उसने बनाई थी उसमें स्टोर कर दिया, एंड सो ऑन. सो दिस फंक्शन इज मैप in this case is doing converting all the values from integers to strings and putting them back in the list. There are 4 items in this case. Okay, pause the video and think about it कि ये वाला जो second option है map वाली, ये क्या कर रही है. So what this is doing is it's taking this custom function and it's applying to all of the items in this iterable. और हमने देखा था कि range iterable is just 1 0 1 2 3. And when you apply this function on all of the items 0 1 2 3, you get the squares, which is this one. So सारे squares उसने नई list बना के उसमें डाल दिए, and that's what you get. Filter is another interesting function. Filter takes again 2 parameters. First one is the criteria, second one is the iterable. It can be list, it can be range, it can be any iterable, जिसके ऊपर आप iterate कर सकते हैं. So for example, this is going to give you 0 1 2 3 4 up till 7. अब filter क्या करता है? Filter देखता है कि जितने भी items इस iterable में हैं, इस list में हैं, उसके ऊपर ये criteria apply करेगा. If that is true, it will add it to the new list. If that is false, it will just completely skip from this list. So ये जो function है आपका, it has to return either true or false. It's a boolean function. Filter के अंदर, map के अंदर it can be anything because you're applying that. जो दूसरी example है, इसमें what this boolean function is doing is just checking whether the number is even or odd. इसका मतलब है कि all we are doing here, the filter is filtering out all of the even numbers and putting those in the new list. और जो तीसरा function है, तीसरी example, अच्छा जो फिल्टर है ना, it basically returns an iterable. It doesn't return a straight string. उसको आपको string straight list और उसको आपको list में explicitly खुद convert करना होता है using the list function. और that is exactly the same with this map. This returns an iterable and you have to explicitly convert this into a list. The third example है हमारे पास, that is we have a string, we have a list with a bunch of items. और उसके ऊपर हम क्राइटेरिया क्या अप्लाई कर रहे हैं, दिस कस्टम फंक्शन. सो दिस इज अ बूलियन फंक्शन विच रिटर्न्स ट्रू फॉल्स. ये देख रहा है कि हर आइटम, इफ दैट्स अ स्ट्रिंग, you copy that in a new list. If that's not a string, you just simply ignore that. So this is going to create a new list with a set of strings in it and ignore everything else. Reduce we can skip for now. Alright, so here is another very simple topic. We are going to take a detour and talk about functions and their parameters. So the concept is very simple. ये हमने bisection root का एक example हमने देखी जिसके अंदर we have one parameter and that's it. और वही parameter हम change कर सकते हैं और मुख्तलिफ values निकाल सकते हैं square root की. अब imagine करें ये epsilon, अगर आपने ये change करना है तो आप क्या करेंगे? That's the question. One option is कि you just change this value right in the code. But the point is, अगर आप ये चेंज करेंगे तो ये फंक्शन हर वैल्यू के लिए वही एप्सिलॉन यूज करेगा. लेकिन अगर आपने कुछ वैल्यूज के लिए छोटा वैल्यू एप्सिलॉन यूज करना है, कुछ वैल्यूज के लिए बड़ा एप्सिलॉन यूज करना है, फिर आप क्या करेंगे? तो दैट्स अ प्रॉब्लम. उसके लिए व्हाट वी डू इज
we just introduce a new parameter called epsilon. अब हम अपनी मर्जी से दे सकते हैं हर किसी वैल्यू के लिए कि हमने कौन सा epsilon चूज करना है, राइट? अब सारी वैल्यूज के लिए, ज्यादातर वैल्यूज के लिए तो एक एप्सिलॉन आपके दिमाग में होगा कि आप वही यूज करोगे। लेट्स से 0.01 आप ज्यादातर वैल्यूज के लिए यूज करते हो। बहुत ही कम वैल्यू ऐसी होंगी जिसके अंदर आपने लेट्स से छोटा या बड़ा करना होगा 0.00001। लेकिन ज्यादातर वैल्यूज के लिए आप वैल्यू आप दे रहे हो इस फंक्शन में और उसके साथ एक पैरामीटर एप्सिलॉन जा रहा है और एप्सिलॉन इज सेम मोस्ट ऑफ द टाइम, यानी कि आप हर किसी वैल्यू के साथ 0.001 0.01 खाम में लिख रहे हैं, विच इज रिडंडेंट। सो इस चीज से बचने के लिए वी हैव गॉट समथिंग कॉल्ड डिफॉल्ट पैरामीटर। डिफॉल्ट पैरामीटर में आप क्या करते हैं, जो आपका फंक्शन के अंदर पैरामीटर है उसके अंदर आप डिफॉल्ट वैल्यू देते हैं इक्वल्स टू और डिफॉल्ट वैल्यू। अब होगा क्या, जब आप फंक्शन कॉल करेंगे तो आपने देखा यहाँ पे हमने कोई किसी किस्म की वैल्यू नहीं दी जो सेकंड पैरामीटर है। जब आप सेकंड पैरामीटर स्किप करेंगे तो दिस डिफॉल्ट वैल्यू विल बी अज्यूम्ड, आपको बार बार नहीं लिखनी पड़ेगी। लेकिन अगर हमने एक नई वैल्यू यहां पर डाल दी सेकंड पैरामीटर में, तो फिर ये वाली वैल्यू जो है दैट विल ओवरराइड एवरीथिंग, और दिस वैल्यू जो कि डिफॉल्ट पैरामीटर में स्पेसिफाइड है दिस विल बी इग्नोर्ड। सो दैट्स द पर्पस ऑफ these default parameters. It's a very simple concept. So if no argument is given, default value will be assumed. डिफॉल्ट पैरामीटर फंक्शन के बिल्कुल राइट साइड पे राइट मोस्ट पैरामीटर्स होना ज़रूरी हैं। आप ऐसा नहीं कर सकते कि x को डिफॉल्ट पैरामीटर बनाएं और एप्सिलॉन को डिफॉल्ट पैरामीटर ना बनाएं। दिस विल बी ए सिंटैक्स एरर। हमेशा जितने भी राइट साइड पे देयर कैन बी मैनी डिफॉल्ट पैरामीटर्स, लेकिन जितने भी होंगे वो सारे के सारे राइट मोस्ट पैरामीटर्स होंगे। आप पिक एंड चूज नहीं कर सकते कि कुछ बीच में आपने एक बीच में से पकड़ लिया उसको डिफॉल्ट बना दिया, फिर 3 छोड़ के चौथा आपने डिफॉल्ट बना दिया। यू कैन डू दैट। These are valid ways to call a function which use default values. So this is valid क्योंकि यहाँ पे default value assume हो जाएगी। This will override the default value. हाँ, अब आप जो है ना अपने पैरामीटर्स को नाम के साथ भी एक्सेस कर सकते हैं। एप्सिलॉन इक्वल्स टू 0.01। सो आप ये देखिए यहाँ पे हमने नाम के साथ इसको एक्सेस किया। अब मज़े की बात है कि आप इसका ऑर्डर भी चेंज कर सकते हैं अगर आप नाम साथ में दे रहे हैं। दीज आर कॉल्ड नेम्ड पैरामीटर्स। So named parameters में you can specify names and you can also change the order like in this case. So अगर आपको एक function का parameters का order याद नहीं है तो this is the way to go. और usually libraries के अंदर we use named parameters क्योंकि उसमें functions के parameters इतने ज़्यादा होते हैं कि हमें order याद रहना possible नहीं है बगैर कोई documentation देखे. So these named parameters and default values are really helpful. What's wrong here is that you cannot have a named parameter और उसके बाद आप दूसरा उससे अगले वाला you just specify a plain parameter, वो भी आपको named parameter ही देना पड़ेगा जिस तरह कि हमने डिस्कस किया। this one is right, यहाँ पे अपने उल्टे parameter दे दिए हैं। it's not a syntax error but it's probably going to be a bug because वो समझ रहा होगा कि आप शायद 0.01 का स्क्वायर रूट निकालना चाह रहे हैं और this is your epsilon. And in the next video, we'll talk about exceptions. So see you then. Bye-bye.